chapter. We have completed 2.55, but we will just repeat a little for recollecting what we have studied in 2.55, and then we will go to 2.56. So, we'll just read the verse for you all. Shri Bhagavan Vacha Prajati Yad Kaman Sarvan Partha Manogatan Atmani Eva Atmana Tushtaha Iti Prajana Tad Sthita Pragya Tad Uchyate. Please forgive me for my bad cold. I have got a very bad cold today. The Supreme Personality of Godhead said, when a man gives up all varieties of desires of sense gratification which raises from mental concoction, and when his mind is thus purified, finds satisfaction in self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. So, does anyone remember what points we had discussed last week? किसी को याद है? प्रभु जी, there are two types of sense gratification, gross and subtle. Very good. Once in a while. Today I am getting too many surprises. Huh? She is also remembering the points and telling is a very good surprise. Very few people remember the points. It's a very important point. There are two types of sense gratification. One is gross and other is subtle. So, if you are saying Prabhuji gross mein nahi ho, so you are involved in subtle form mein, we are all involved in sense gratification. Okay, yeah. What else? And 6 types of surrender. Leaving everything which is harmful to devotional, accepting one which is good for devotional service. Then the conviction that Krishna will protect us. Rakshati iti vishwaso go tripte varanaha. The acceptance of Lord as a master and full self-surrender. Last Karpanya. Right. So, these are all the 6 forms of surrender which is already mentioned, which I will be taking in detail when I will be taking Nectar of Devotion for you all. That time I will take in detail. अभी आप लोग Nectar of Devotion के लिए तैयार नहीं हो. So, let's complete with the Bhagavad Gita first and then we will go to that level. Yes, what else we discussed? Anyone remembers? You told a story. Laddu Gopal and एक बार एक ये हुआ था, उसमें सारे लड्डू सम्मेलन आया था, सम्मेलन हुआ था, सारे लड्डू गोपालों ने अपने अपने यजमानों के साथ देख लेना आपके भी घर के यजमान या आपके घर के भगवान भी कहीं उस सम्मेलन में न जाके आपके बारे में न रोएं, आप लोग भी सेवा अच्छी तरह से करें. लॉर्ड शुड ऑल्सो नॉट फील कि भाई ये भक्ति कर भी रहा है तो किस हिसाब से कर रहा है. It should be always taken in the proper sense. Yes, what else? Anybody requires any other important points missed out? Prabhuji, one more point. You said we have to give all varieties of sense gratification. Yes. What are these all varieties? All varieties. All varieties means what? Both gross and subtle. Both gross and subtle. Both has to be given up. Then only one can progress. Otherwise, progressing becomes difficult. If you want, you can keep it a little far off so that the signal will be a little more stronger. Because might be the Wi-Fi signal is a little poorer when you come to this side. It's okay? It's okay? Fine. So now let's go to today's verse. What is today's verse? Dukkheshu anvignamanaha sukheshu vigatasparaha vitraga bhayakrodha siddhadhir muni uchyate. Who can read the translation? One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or elated when there is happiness and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind. What is this question of fear, free from fear, free, away from all these type of problems? What is Lord trying to say in this Bhagavad Gita? In these verses, what is Lord trying to say? क्या बोलना चाहते हैं भगवान, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है भगवान क्या कहना चाहते हैं? Get free from the threefold miseries. Okay, something better. आपको क्या लगता है? Now, who is not elated in happiness?
स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ कैसा रहता है? व्हाट इज स्थित प्रज्ञ का एक्चुअल डेफिनेशन? See, one thing I'll tell you, first and foremost, the main purpose of a satsang is to inform you that you are not attached to, उनको बोलना जरा वॉल्यूम कम करने के लिए, तो पीछे वाले क्लास को अपना वंशी में जाके बोलना कि माइक का वॉल्यूम या तो माइक को उस तरफ रखे, इधर आवाज़ इतना आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू टेक द लेक्चर। I'll tell you one small story to understand this also. एक बार ना गधा donkey, you all must be aware of this donkey story. One fellow had lot of donkeys. तो उसको रात को every day after the day is over, शाम को जाके डोंकी को बांध के रखता था ताकि किधर चला ना जाए। एक दिन क्या हुआ, सब गधे, उसके पास काफ़ी गधे थे, तो सब बांधा उसने। तो एक गधे को उसने जो बांधा, सब गधे को बांध दिया, एक गधे का रस्सी गुम हो गया। अभी कैसा बांधेगा इसको? तो अभी जब गधे का कान पकड़ के बैठा कि भाग ना जाए, तो एक बंदर आया, सॉरी एक महात्मा आया वहाँ से। तो महात्मा आके बोले, अरे क्या हो गया भैया, ऐसा पकड़ के बैठे हो? तो बोला कि देखो मैं क्या करूं, इसका रस्सी गुम हो गया, इसके लिए मैं पकड़ गया। तो महात्मा ने बोला, देखो एक काम करो, गधे को है ना बांधने की जरूरत नहीं, गधा है वो, एज इट इज ए डोंकी, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट एक्ट एज इफ ही इज यू आर टाइंग हिम। तो इसने भी अच्छा ठीक है, तो ये वेंट गधे गले पे ऐसा ऐसा कस के बांधा, फिर वो ये लिया, वो कूठा जो रहता है, कूठे के साथ ऐसा करके, गधा भी देख रहा था। पूरा रात हिला नहीं, बाकी थोड़ा भी गधे लोग ने सरका, मर ये गधा तो बिल्कुल सरका नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो गधा को चराने के लिए लेके जाना था, काम कराने के लिए, तो सबको खोल दिया, बोला चलो चलो चलो, इसको भी मारा, हिल नहीं रहे। बोला यार ये हिल नहीं रहे यार, तो बांधा हुआ है, क्या करूं? जाके उसने इसको बोला, महाराज के पास गया, महाराज जी आपने क्या जादू किया, हिल नहीं रहा है गधा। बोला क्या हो गया, हिल नहीं रहा? कुछ जादू वादू नहीं किया, जिस तरीके से बांधा उसी तरीके से खोल देना, जिस तरीके से बांधा उसी तरीके से खोल देना। अच्छा, तो ये गया कूठे से ऐसे दिखाया एज इफ ही इज अनटाइंग द नॉट, देन गधे के गले से भी अनटाई किया, गधा भी करके। So what is the moral of the story? We are actually not bound to this material world, but because of Maya, we are considering ourselves bound to this material world. हम सब उस गधे की तरह ही हैं कि बस इस रस्सी से हम अपने आप को, एक इमेजिनरी रस्सी के साथ हम अपने आप को बांध के रखते हैं इस संसार के साथ, ना कि इस संसार को छोड़ के जाना है। द डोंकी वॉज फ्री, रात को जा सकता था, बंदा हूं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा घर, फाइन, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेवर सेड, लॉर्ड हैज नेवर सेड डोंट डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट लॉर्ड डिड नॉट से गेट बाउंड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोंट गेट बाउंड। हाउ डू कैच ए मंकी? बंदरों को कैसे पकड़ते हैं? कभी पकड़ा नहीं प्रभु जी, बोलो। खाने को दिखाते हैं। हाँ, वो तो आपका चश्मा निकालने के लिए फ्रूटी दिखाना पड़ता है, वो तो ओनली वृंदावन के बंदर है, वो वृंदावन के बंदरों को ही करना पड़ता है। सी, बंदर को पकड़ना, हाँ नहीं नहीं, हाँ, तो इट इज सेड इन 3 डे भगवद गीता, फर्स्ट डे कोर्स में सिखाते हैं। बंदर, एक छोटा सा मटका ले लो, हाँ, छोटा सा पॉट, और उसके अंदर चने डाल दो, एंड पॉट का मुंह इतना छोटा होना था कि अंदर हाथ जावे, बट एक बार मुट्ठी में बांध के बाहर ले रहे ना तो बाहर निकले नहीं। तो बंदर को एक पॉट में ये रख दो, एंड उसके अंदर
चने डाल दो. The best part of it is, this is how monkeys are caught on technically. The monkey goes and puts his hand inside and takes the chana, gram. And now he is trying to pull the hand out. Now the hand doesn't come out of the pot because the hand has expanded now. Then वो बंदर ची 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 करके चिल्लाएगा, सब करेगा. But all he has to do is, it's not the story of the monkey. It is our story. हम भी जीवन में कुछ चीजों को पाने के चक्कर में पूरा जीवन बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे. We are not trying to leave it. Whereas the minute the monkey would leave the chana, he is free. And just because of that one fist of chana, lifelong he has to dance to the tune of the owner. But मदारी के धुन में वो ना जीवन भर कूदते रहना पड़ता है. क्यों? एक मुट्ठी. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? माया जो है ना, एक मदारी है और हमको सबको नचा रही है और हम लोग बार बार नाच रहे हैं. हर जन्म में जन्म लेके बार बार नाच रहे हैं, बस एक बार वो मुट्ठी छोड़ने को तैयार नहीं. सो दिस अटैचमेंट टू दीज वर्ल्डली थिंग्स इज होल्डिंग अस to the core of this material world, whereas we are already detached. No one is, we are all godly, we are all soul, no one is bound. One day God has made us so free that one day we can leave this body and go also. We have to go rather. So we are not bound in this body also, but still we feel, as long as I am in this body, I have got a duty of my father, son, daughter, daughter-in-law, whatever it is, blah, 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 we are bound. But actually, हम पहले से ही मुक्त हैं. We are already liberated, but we consider ourselves as bound, like that donkey. We think, नहीं, बांधा है, मैं हिल नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता. So we are actually liberated. And satsang and these type of Bhagavad Gita and all the Shastra, what knowledge does it gives? It gives us that we are already liberated. हम लोग पहले ही मुक्त हैं और अपने आप को बंधे समझ रहे हैं माया की वजह से. We are considering ourselves tied to the kutha. So please understand, one who is not disturbed in mind amidst the threefold miseries, तापत्रय, आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों तापों से हमको इस धरती पे पकाया जाता है, literally. Sometimes we have all the three tap together, या one or two together. एक तो रहेगा ही, आदिदेविक रहेगा या आदिभौतिक रहेगा या आध्यात्मिक रहेगा या तीनों साथ में रहेगा. कोरोना टाइम वॉज आदिदेविक, साथ में नौकरी गया तो आदि भौतिक, और नौकरी गया तो डिप्रेशन की वजह से आध्यात्मिक. सो इट कोरोना टाइम पीपल आर हैविंग ऑल द थ्री ताप्स टुगेदर, आदिदेविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक, तीनों ताप साथ में. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. द वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इन द थ्री फोल्ड मिजरीज. अब कैसे बोलेंगे आप प्रभु जी? I am not at all disturbed by the three-fold miseries. है हमारा एक स्टूडेंट था, बोलता था I'm detached. बाद में हमारा वही सबसे ज़्यादा अटैच निकला. To talk big is very easy. To try to become a hero has become very easy. When it comes to practical application, it's difficult. So how do we understand? तापत्रयों में कैसे हम लोग स्थिर रहें? Not to be disturbed. हाँ, दुखेशु अनुविघ्न मना, सुखेशु विगत स्पराहा, बाद में आ रहा है. Who is not elated in happiness nor in distress. कभी अच्छा किसी का अच्छा टाइम आ जाता तो फिर वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता. कोई समझो कल जानवी को सीए पास हो गई, 5 करोड़ का पैकेज मिला, तो शी विल नॉट लुक इन टूवर्ड्स द क्लास ऑल्सो, बहुत बिजी हूँ, जरूरत क्या है?
है ना? हाँ बोल रहे हैं ना? So people generally when they are elated or when they are in sadness, they get disturbed. अक्सर लोग बोलते हैं, एक बार एक व्यक्ति मतलब भक्ति में, एंड दिस कॉमन इन डिवोशन, डिवोशन दिस इज अ कॉमनेस्ट प्रॉब्लम. एक बार एक आदमी बहुत बड़ा भक्ति कर रहा था, झूम झाम के एकदम कथा वथा सब कर रहा था, अचानक गायब हो गया. तो गुरुजी ने पूछा क्या हो गया, 2-3 महीने से दिखा नहीं. नहीं, अभी तो भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ गया, मेरा बच्चा मर गया. Some problem comes and that's it. Your faith on God just literally gets shaken off so much. How is it possible? How can you ever have such thoughts that one is missing? One has to understand whatever enjoyment, happiness or sadness one is getting is because of his past. See, how many of you all have thanked God for this one karma that you are able to come and attend the Bhagavad Gita class? You should thank God. Very nice. If you are thanking, very nice. Thank God. At least you are in a position to come and attend the Bhagavad Gita class. So many people on Sunday morning are sitting. Some are sleeping, some are hangover and tongue over and all that. Saturday night tongue over. अच्छा, some people are, प्रभु जी बहुत मन बहुत करता है, क्या मगर बुलावा नहीं आया. So they have a reason not. No, this nose come rotated. Okay. So फायदा. चल में भगवान की क्या जरूरत है? अगर सब कुछ कर्म का ही फल है तो भगवान की क्या जरूरत है? यस, रिपेंट, टेल मी. सब कुछ अगर कर्म फल ही है तो भगवान की क्या जरूरत है? हाँ? नहीं, इफ सपोज योर हार्ड वर्क or rather your karmas, because of the karmas you got a nice job, you got a nice children, you got nice let's say house. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट अ वियर्ड एग्जाम्पल. इफ कर्म से ही मिल रहा है तो फिर भगवान की क्या जरूरत? इज माई पॉइंट सेंसिबल और मेकिंग सेंस और नॉट? You are close but not correct. You are close but not correct. Yes, what's your name? I forgot. गिरीश नहीं, साहिल. हाँ, what do you think? आपको क्या लगता है? अगर सब कुछ कर्म से आ रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है कर्म से, दुख और सुख, तो भगवान की क्या जरूरत है? ये लाइफ में हमको भगवान ही दिया है, तो भगवान का जरूरत है उसमें. मतलब हमारे जो कर्म वगैरह होते हैं वो कैलकुलेट हो गया तो भगवान ही कहता है, पर भी भगवान ही देते हैं. कैसे? एक्सप्लेन. See, don't have a fanatic approach. We are reading the science of devotion, and science means उसमें कुछ explanation नहीं, गलत नहीं, लॉजिक होना चाहिए, सिक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. अब मैं बोल दूं अरे प्रभु जी भगवान तो लाइट है, हाँ, don't accept things just because I am saying. Ask for a logical understanding. Yes, प्रभु. अपने कर्म से जो रिजल्ट मिल रहा है, हाँ, उस रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए हमें भगवान की जरूरत है. मेंटेन करने के लिए. और रिजल्ट अगर आया जो भी एक्सप्लेन. कर्म किया, रिजल्ट आया. हाँ, रिजल्ट सपोज एक तरह से यस राजेश. Because of past karma, whatever you are getting, हाँ, means you will be in middle of karmas only, हाँ, birth after birth. हाँ. To come out of the birth then cycle, you need a mercy. The mercy. Okay. The great Uma will tell. Sorry, Gauri will say. उमा तो पीछे के बैठ गई. हाँ,
बोलो बोलो। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जो मिल रहा है हमें अपने कर्म से मिल रहा है, लेकिन अपने आज के कर्म सुधारने के लिए हमें भगवान की जरूरत है। हम यहाँ क्लास में नहीं आते तो हमें भगवान का पता नहीं चलता, तो हम अच्छे कर्म ना करते, अच्छे रास्ते पे ना चलते। आज का जीवन अच्छे कर्म करने के लिए। नो नॉट एग्जैक्टली। निकिता माता जी। Okay, you getting the point what I'm trying to say? If everything is by virtue of karma, then why do we need God? हाँ प्रभु जी, कर्मा जो भी है वो सब टेम्पररी है। अगर हम लोग भगवान अगर हो गए, काय का टेम्पररी है? हाँ अच्छा रहेगा तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, बुरा रहेगा थोड़ी देर के लिए रहेगा। हाँ, तो वापस तूने जो कमाया वही मिल रहा है ना तुझे। हाँ, तो भगवान इससे चाहिए। टेम्परेरी कैसा? तूने बहुत बुरे कर्म किए तो बहुत टाइम तक चलेगा, बहुत बड़े बड़े बुरे कर्म के नरक में बहुत दिन तक तेरे को तला जाएगा उधर। टेम्पररी ना, थोड़े टाइम के लिए कटेगा फिर वापस ही आएगा ना ये। हाँ, तो यहाँ पे भी कर्म का ही फल भुगत रहा है ना। नहीं, अगर भगवान रहे तो दोनों कर्म रहेंगे, मतलब अच्छे और बुरे दोनों, तो बीच में आएगा वो अकर्म। मैं क्वेश्चन इज, हाँ मीना माता जी बोलिए। हमारे कर्म सही है या गलत है वो जज करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, तो प्रभु जी Judge again you are getting stuck in one wrong understanding, I asked Nikita Mandika, says I'm confused. Okay, I'll confuse you a little more. प्रभु जी कह रहे हैं, हाँ प्रभु जी फर्स्ट ये है कि टू ब्रेक द कर्मा साइकिल एंड गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्डन। सेकेंड ये है कि ओनली बाय डिवोशनल सर्विस वी कैन डू अ कर्मा एक्टिविटी बाय विच। agreed, I am not talking of that. If in general everything is because of karma, then what is the instinct of God? Once to add on to the confusion of her Nikita Mataji, I'll tell you a small story. Once Lakshmi Devi, she got very proud. मेरे वजह से whole world dances. Everyone wants vitamin M, so everyone is dancing. तो मेरे वजह से पूरा दुनिया नाच रही। तो Lord said, it's not like that. It is because I am behind you, the world is behind you. I am behind you. I take your seva, you are serving me, and I am loving you, I am liking you, and I am behind you, that's why the world is behind you. She was not ready to accept. She said, ठीक है, चलो जाके मृत्यु लोक में राउंड मार के आते हैं। यहाँ आते हैं सब लोग, यहाँ आते हैं मृत्यु लोक में। क्यों? हम लोग यहाँ सर्कस करते रहते ना। तो वहाँ बाय दैट टाइम ही केम डाउन, वहाँ पे एक आदमी मर गया। तो सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल। तो लेट मी प्रूव राम नाम असत्य है, अभी मैं प्रूव करती हूँ। उधर इमीडिएटली बारिश हो गई, किसका? गोल्ड कॉइन्स का। अब ये मत पूछना 10 ग्राम का कि 5 ग्राम का, बट गोल्ड कॉइन का बारिश हो गई। तो सब लोग ने अर्थी को रखा बाजू में, भागे। That time immediately Lakshmi Devi said, see, your people, look at them, इतना important काम कर रहे थे, बोल रहे थे राम नाम सत्य है, फिर भी छोड़ के they came running for gold coins. Lord, no, they came to you because I am favoring you. How? अगर ये सच बात है कि लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे, तो वो मुर्दा क्यों नहीं भागा आपके पीछे? वो मुर्दा क्यों लेटा है? बाकी सब लोग भागे, मुर्दा क्यों नहीं गया? क्योंकि उसमें से मैं, that is Lord as the super soul, the minute you die the super soul leaves the body.
So it is a super soul which is the energy factor which is making us run towards Lakshmi also. The minute the super soul leaves, even the person cannot go towards Lakshmi. So hence Lord proved, this is hence proved. Lord proved to Lakshmi Devi कि मैं सब लोगों के अंदर हूँ, इसके लिए लोग तुम्हारे पास भाग के आ सकते हैं. So my question now to you is, अगर कर्म से ही सब कुछ आता है तो भगवान की क्या जरूरत है? If you are intelligent, from this you will get a clue of it. With the help of God, we can minimize our bad karmas, like dukh and miseries. You want to use God to reduce your karmas? Karmas आपने किया, आपने कमाया है, तो आपको वो अच्छा. Why using God? You want to reduce your good karmas? हाँ, only the bad karmas. Why? We are into bhakti, so we don't get. No. Please understand. Yes. This karma gives materialistic results. I am talking with respect to materialistic also. I will give an example of materialistic things. चलो, आपने अच्छे पढ़ाई की, उससे कर्म का फल क्या मिला? डिग्री मिल गया. बट कर्म आपको फल नहीं दे सकता है. कैसे? अभी चाहिए आपको क्या? जॉब, नौकरी चाहिए. अगर ऐसा रहता तो हर कोई लड़का जो कॉलेज से पास आउट होता उसके हाथ में बढ़िया जॉब रहता, एवरीथिंग बढ़िया रहता. बट बिकॉज ऑफ योर स्टडीज यू मे गेट. चेयर तो रखेगा. संभल. See, everything is uncertain in this material world. Everything is uncertain in this material world. This proves, hence proved. So, by your activities, by your karma, you got your degree. But the phala of the karma can be, if you can take it as a karma का फल, मुझे डिग्री मिल गया, जाना है घर पे बैठना, तूने मेहनत किया, मुझे डिग्री मिल गया, जा घर पे जाके बैठ. नहीं, जॉब नहीं दिया, वो कौन देगा? That God will give. So the phala of the karma, कर्म का आपको रिजल्ट मिल सकता है. रिजल्ट को हिंदी में क्या बोले? फल नहीं बोल सकते. इट्स नॉट द फल, परिणाम आपको मिल सकता है. बट द फल ऑफ द कर्म इट कैन बी ओनली गॉट व्हेन द लॉर्ड विशेस और डिजायर्स. व्हेन द लॉर्ड विशेस, यू मे हैव अ बिग डिग्री, बट आप दर दर की ठोकरें खाओगे. बट एंड में अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स से यू गॉट अ बिग डिग्री, आपके पास बहुत बड़ा डिग्री है, बट आपके पास नौकरी नहीं है. और अचानक आपने एक आदमी को मिले जिसको उसको आदमी की जरूरत है. इज लुकिंग आउट फॉर एन इंजीनियर, लेट्स से, एंड ही सेज चलो कल से काम पे आ जाना. यहां पे उसको जरूरत है, मगर क्या भगवान को अपने कर्म के फल का जरूरत है? इज गॉड लॉर्ड डिजायरिंग? नो, but still he diverts. That is what is the greatness of God. He is not desiring for any of the results of our karmas, but still he accepts it. That is what we have to understand. So matter is little complicated, but if you think it with an open mind, with a simple mind later on, or you re-watch this video again, then you will understand. Prabhuji, you had told, referred one verse also, we need 5 things. 5 factors. This comes in the 18th chapter. Karta, Adhishtanam, Sthanam, all these places, the doer, the place, all these. These are 5 factors. But the 5th factor is Panchamam is Lord. It's like to play a cricket game, you need, what do you say, cricket stadium. You need a cricket stadium. Let's say you want to play cricket, you need a stadium. You need a ball and a bat. Then you need is players. Then of all that is you need what do you say,
umpire and other gadgets. So these are maybe the factors, but the most important factor is you need a ball to play. If that is not there, the whole game cannot take place. So I'm just giving a weird example. When I'll take that words, I'll give a very detailed explanation on that. So you need n number of things, but there may be a stadium, there may be a bat and ball, there may be a lighting also in the stage, everything may be there, but if the players is not there, then is the match possible? So for any activity to be accomplished, there are 5 factors which is given in the 18th chapter, but the 5th factor is the most important factor, and the 5th factor is nothing else other than the Lord himself. So Lord is saying here, one whose mind is not elated with problem or in distress. Classic example of problem is Kunti Maharani. When Kunti Maharani, when Krishna, she is telling Krishna, what did she say? Vipada santuta shashvat tatra jagat guru. Give me vipada. कोई नहीं मांगा है दुनिया में, कोई मांगेगा? कोई आके नीचे भागेगा, भगवान थोड़ा दिन प्रॉब्लम नहीं दिया, मेरे को प्रॉब्लम देना, मेरा पास सब चीज़ में ना, मेरे बाजू वाले का ड्रेस मेरे से अच्छा है हम बोलते हैं, मेरे बाजू वाले का गाड़ी मुझसे अच्छा है बोलते हैं, मगर मेरे बाजू वाले का प्रॉब्लम मुझसे बड़ा है, मुझे और बड़ा प्रॉब्लम दे, कोई बोलते हैं क्या? कुछ टेम्पल प्लीज़ मेरे को थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम करके दो. तो कुंती महारानी न स्तुति से विपद संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मेरा प्रॉब्लम बढ़ाओ, इंक्रीज माई प्रॉब्लम, बिकॉज ओनली इन प्रॉब्लम्स I remember you, and in your remembrance my problem gets solved. Because who is solving the problem for them, for Kunti Maharani? Krishna himself. Whenever there is a problem, Krishna himself comes. They have to undergo the strain or the trouble, but the problem is finally solved by Kunti Maharani. So what do we understand from this? She says, that is why there is no point in getting elated, there is no point in getting sad also in bad times. I have always told this story, I will tell it again. एक बार एक आदमी को अपने खेत में ना अचानक सुबह जाके देखा एक जंगली घोड़ा आके खड़ा है, ढूंढा इधर उधर, कोई मालिक है? कोई मालिक नहीं था. बोला मालिक नहीं है तो फिर मैं ही मालिक हूँ. तो कैसे वैसे घोड़े को पकड़ के घर पे लेके आए. पूरे गांव वालों ने बोला अरे वाह वाह, आपका तो निकल पड़ी, आपको एक अच्छा घोड़ा मिल गया. क्या लाखों का तो घोड़ा आता है, घोड़ा मिल गया. तो उसने बोला अच्छा क्या बुरा क्या, सब हरी इच्छा. फिर थोड़े दिन के बाद उसका लड़का बोला पापा इस घोड़े को मैं टेम करूँगा, उसको मतलब राइडिंग करूँगा. तो घोड़ा था थोड़ा जंगली, नो वॉज वेरी स्टबर्न घोड़ा. तो कैसे ऐसा लड़का चढ़ के ऊपर उसको टेम करने गया, घोड़ा ने गिरा दिया, गिर के उसका हाथ पैर टूट गया. इतने में गाँव लोग आए, हाय हाय व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज वेरी बैड हैपेंड, बंद करवाया, बहुत बुरा हुआ. बोला क्या बुरा? अरे आपका लड़के का हाथ पैर टूट गया. वही गाँव वाले लोग जिसने बोला अरे तेरा बढ़िया हो गया, तेरा फायदा हो गया, तेरे को घोड़ा मिल गया. बोला हाँ, अच्छा क्या बुरा क्या, सब हरी इच्छा. कुछ दिनों में राजा के ऊपर युद्ध हो गया, दूसरे एनिमी ने अटैक किया. तो राजा ने सभी गांव के सभी यूथ को बुलाया, सभी गांव से यूथ को बुलाया, चलो आर्मी में ज्वाइन करो, युद्ध लड़ना है. तो सबके बच्चे गए आर्मी में, पर इसका बच्चे का टांग टूटा है तो उसके ले गए, छोड़ गया. तो तुरंत गांव वालों ने बोला अरे बहुत अच्छा हुआ, तेरा लड़के का टांग टूट गया, हाथ पैर टूट गया, अब उसको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है. तो इसने वापस बोला अच्छा क्या बुरा क्या, सब. सो इफ एनीथिंग गुड हैपेंस विथ यू, एनीथिंग bad happens with you, it's hari ichha. When he has desired, then only you got the phala of your karma also, na? I just explained to you the phala of the karma. When I said if you have studied but you may get a job, you may not get a job, that is the desire of the Lord. For your studies you have got the certificate, that is your immediate phala.
You can't tell the university, I studied, you have not given me job. University says, I will give you only the degree, certificate दे दूंगा, वो मिल जाएगा तुमको. But job मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में. So similarly, if you are getting something good also, it is by the mercy of God, and if you are getting something wrong also, the phala is given by the Lord. And don't worry, Lord gives that much pain which you can undergo. He knows कि कौन कितना दुख झेल सकता है, उतना ही दर्द देगा, उससे ज़्यादा दर्द नहीं देता है. This is always a fact, because he knows इससे ज़्यादा देगा तो ये सह नहीं पाएगा. That is why we have got a mixture of prarabdha karmas. We have got good karmas and bad karmas. That is why Lord is saying also in this verse, दुखेशु सुखेशु. दुख और सुख हर व्यक्ति के, भिखारी के जीवन में भी जाओ ना, उसमें भी सुख और दुख रहता है. आज क्या मिला, अरे आज गाड़ी में, आज मैं गाड़ी के पास जाके भीख मांग रहा था, एक सेठ ने मेरे को पूरा इंग्लिश खंबा दे दिया बोलेगा. फॉर हिम दैट इज सुखा. और एक दिन भीख भी नहीं मिला तो दैट इज दुखा. सो इवन फॉर अ बेगर ऑल्सो देयर इज समटाइम्स सुख एंड देयर इज समटाइम्स दुख. सो लाइफ इज ऑलवेज इन अ वाइब्रेटिंग मूड फॉर ऑल ऑफ अस. And it is always said, na, that is life. ECG का ग्राफ ऐसा रहता है तो ही, what is a dead man's ECG graph? So don't think your life will be a straight line. It will be always up and downs will be there in life. And that is life. That is understanding of life. So one who is away from the threefold misery, who is not elated and not happiness, who is free from attachment, fear and anger. What is this attachment, fear and anger? These are all interlinked. Fear and anger are the outcome of attachment. A young boy may fear that he may lose his girlfriend because he is attached. If he is detached, gayi to gayi. Simple, right? गई तो गई, दूसरी आ जाएगी. बट यू आर अटैच, वो नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, उस पर जहर कर दूंगा, उसको जहर पिला दूंगा, उस पर एसिड अटैक करूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, ब्ला 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 ब्ला. अटैचमेंट एंड फियर. फियर ऑफ दिस अटैचमेंट इज ऑलवेज डेंजरस. Any attachment you have fear, that is more dangerous than anything else in this world. So always remember, and suppose you lose, then you become angry, and in anger what you do, you are not, actually anger is called temporary madness. गुस्से में आप क्या करते हो आपको खुद पता नहीं चलता है. Afterwards you realize, oh मैंने कुछ कर दिया है, but by the time it is too late. So this attachment से अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं. I'll tell you one small story of attachment, or how one has to keep himself free from attachment. How attachment comes. Once Vyasdev was explaining to Gemini Rishi. In fact, he was explaining to all the 18 Puranas were given to the 18 Rishis. Various, some were given this Purana and that Purana was allotted to each and every Rishi. And he was explaining. Every time he is writing, one should not get attached, one should refrain from his opposite sex, one should not keep, think about the opposite sex, and all those things he writes again and again. So Gemini Rishi said, why you are writing all this? We are so learned sages. We know all this. You don't have to tell us all this. उनको पता है, हम लोग इतना ऑलरेडी ज्ञानी हैं. आप क्या बार बार लिख रहे हो कि भाई औरत से दूर रहना, औरत के ऊपर इतना ध्यान मत देना. Senses can be very, can be blown away very easily. One can just flow away in this, sense gratification में व्यक्ति अपने आप का पर का आपा खो देता है. He loses his control over himself. So Vyas did not say anything. That day evening, after the class was over, everyone went to their hermitage. Krishna, that day night, it was raining.
एंड दरवाजे पे ठक 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 आवाज. तो Gemini Rishi went and opened the door. देखा, there was a beautiful young girl, young lady standing, totally wet, that filmy style. फिल्मों में दिखाते हैं ना एकदम wet heroine, supposed to be more erotic. देखा. What happened? She said, see, I am lost in the jungle. Please save me. I want to spend the night here. It's already dark. Wild animals are there. Very dangerous for me. He said, okay, you come and stay in this hut. I will go out. I am a sadhu. I am not supposed to say. I am supposed to control my senses. My guru Vyasadeva has told me. Okay. But what he had seen, her beauty, the vision, that was going in his mind. Continuously it was going in the mind. He went and sat out and he had told that lady, see, even if anyone comes and knocks the door, even if I come and knock the door, do not open. The lady said, fine. But whole night when he was contemplating, he decided, I have to go and look at that lady again. He went and knocked the door. दरवाजा वापस खटखटाया. तो लेडी ने बोला, कौन है? बोला, मैं हूँ. बोला, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ. आपने बोला मैं दरवाजा नहीं खोल सकती. He was getting attached. This is attachment. In attachment, one becomes crazy. Knocked the door, this and that. Finally, he climbed up the roof, removed the tiles, and jumped in. What happened? He fell in the lap of that lady. And this time, the lady was in her true sense. Vyasadeva himself was sitting. व्यासदेव के गोदी में आके गिरे. एंड पूछा व्यासदेव, क्या बार बार लिखने का नहीं ना? पूरा शास्त्र में बार बार लिखा था, कंट्रोल योर सेंसेस, कंट्रोल योर सेंसेस. सो he said, yes, agreed. Senses are so strong, it can. So please don't be attached to anything, and especially don't be a slave of your senses. That is why we always tell the youth, please don't, tend to look into pornographic things. Pornographic things are the worst thing in this world. What happens? Technically speaking, if you go to a cyber cafe and if you open a pornographic site, you can be put behind bars. Police can officially come and catch you, jail you and put you behind bars. What is the main purpose behind of all this? The main purpose is these things brings out the animal inside you. आपके अंदर का जानवर जगा देते हैं. That is why even the law, even the materialistic world where the whole world is, the materialistic world means world where they are only saying, oh, enjoy more sense gratification, more. Even they have put a restriction. So why not Shastra putting restrictions on that? That is why we have to always follow the 4 regulative principles. No meat eating, no intoxication, no illicit sex, and no gambling. बार बार बोलना पड़ता, पर मालूम है प्रो जी, बाय हार्ट हो गया. आप नो मीट ईटिंग बोलते, बाकी 3 तो हम लोग फटाक से बोलते हैं. गुड, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, it is very difficult. It is, your position is like Gemini Rishi. Your position is like Gemini Rishi. Gemini is a great Rishi, but still he was sucked into this. So what to talk about common people like you and me? So we have to really, that is why we have to always be in devotional process. And then that person, he is said to be in a stage of steady mind. Your mind is in steadiness. Otherwise your mind is not in steadiness. Your mind is only in dil mange. Okay, with this we'd like to close today's session. Anybody has got any doubts, questions, can ask. Yes, किसी को कोई प्रश्न है? होना तो नहीं चाहिए, सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे.